Guys, keep watching awesome TV and be awesome. I am definitely learning. I'm trying, Pooja, to learn all of this. Yeah. They both seem to be surprised. They're like, "Such में what's go la रहा है?" It is. I mean, it is. Yeah. I want to know what is your take on modern day love relationships. I have two sisters and I listen to their stories all the time, and they're in school and there is so much that is happening in their life. There's so much drama that's happening in their life. But what I like is every relationship is not conventional or traditional. People are okay with questioning themselves and trying to figure out कि उनके लिए क्या वर्कआउट करता है. वो मुझसे बात भी नहीं करती थी सीधे मुंह ज्यादातर, क्योंकि मैं स्कूल का बदमाश बच्चा था और वो टॉपर. मतलब वो मेरी क्लास में थी, मेरे आगे बैठती थी, पर वो ऐसे देखती थी जैसे अंशुमन. तो एक दिन रैंडमली मैं सुबह सुबह स्कूल पहुंचा और ये लड़की मेरा हाथ पकड़ती है और मुझे खींच के ले जाती है स्टूल के ऐसे पीछे की तरफ. तो मैं बड़ा डर गया. मैंने कहा भाई क्या सीन हो गया. What? Hello and welcome to Awesome TV. मैं हूँ पूजा नवाते and today I'm in conversation with the team of Dil Logical. Hello and welcome to Awesome TV. Hi. How are you guys? This is the last interview for the day. I'm sure you guys are exhausted, but I will pump in all the energy. Thank you. The Logical. Thank you so much. So I saw the trailer, okay. And first thing, yeah, this is coming on the Valentine Day. So happy Valentine Day to you all. To you too. Thank you. It's treat to all your fans and lovers. So do you guys celebrate Valentine Day? हाँ, मतलब कॉलेज तक, मतलब स्कूल तक किया था. फिर उसके बाद तो हर दिन, मतलब फिर तो कोई भी दिन वैलेंटाइन बना सकते हो आप. बिल्कुल बिल्कुल. मोहब्बत के लिए कोई दिन थोड़ी ना है. Anshuman is smiling at the back. मेरे तो बहुत बड़े प्लान्स हैं इस साल. मैं मेरी सारी एक्स गर्लफ्रेंड्स को बुला रहा हूँ और मेरी जो प्रेजेंट गर्लफ्रेंड है उसको भी बुलाया है मैंने, और हम सब स्क्रीनिंग करने वाले हैं दिल लॉजिकल की. एक्चुअली Best answer. The best. Well, yeah, I watched the trailer and so promising. It talks about modern day love relationships, friendship के बारे में भी बात हो रही है. I want to know what is your take on modern day love relationships. I mean, if you're talking about stuff like situationship, open relationship, and problems or anything that the modern kids are dealing with, मेरा take यही है कि it's great. I'm really happy that everybody is dealing with it. Because I think the modern generation has a lot of clarity, and even if they don't have, they want a lot of clarity, and for that they go really far. वो काफी मतलब उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं कि भाई मुझे क्लैरिटी चाहिए. मैं I'll tell you even मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि I've been dating somebody for the last 4-5 years, and the first thing that she told me when I proposed her was that I need clarity, that it's you and me in this relationship, no third person. Wow. So that kind of clarity is really needed, क्योंकि लोग मतलब अपना कुछ ना कुछ पास्ट एक तरीके का छुपाते हैं, या कभी किसी को घोस्ट करके आए होते हैं, या कोई रिलेशनशिप होता है जो अभी खत्म हुआ होता है एंड वो आप बताना नहीं चाहते हो. बट व्हाई? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. आप जितना ज्यादा ऑनेस्ट रहो, चाहे आपका कल ही ब्रेकअप क्यों ना हुआ हो. जज करने के लिए तो लोग बहुत होंगे यार कि अब मेरा कल ब्रेकअप हुआ है, मैं आज किसी को डेट पे नहीं लेके जा सकता. क्यों नहीं लेके जा सकता भाई? मेरे मर्जी है भाई. मेरा कल ब्रेकअप हुआ, पर हो सकता है मैं 1 साल से उस चीज से डील कर रहा था ना. तो हर चीज का रीजन होता है. हम लोग जज बहुत जल्दी कर लेते हैं चीजों को. सो आई थिंक दिस शो विल गिव थोड़ा सा उस चीज पे थोड़ा लाइट डालेगा कि हर चीज ना कैजुअल नहीं होती. कि कोई ओपन रिलेशनशिप चाहता है तो इसलिए नहीं क्योंकि उसको एक कैजुअल रिलेशनशिप चाहिए. रीजन होता है, हर चीज का एक रीजन होता है. I definitely agree with you about open relationship. दिल इतनी बार टूटा है ना कि अब हिम्मत ही नहीं होती है कमिटमेंट देने की. Seriously, अब देखो, आप देखो, खुद ही देखो. I swear, Nupur, we have been coming across terms like benching, being exclusive, situationship. What is your take on all these terms? Have you experienced yourself? No, I haven't, to be honest. Actually started understanding all of these things when I decided that I was going to play Jinal, because I wanted to kind of get an insight into what makes her think that she might want to do an open relationship. But I have like spoken to a lot of Gen Z kids. I have 2 sisters and I listen to their stories all the time, and they're in school and
there is so much that is happening in their life. There's so much drama that's happening in their life. But what I like is about all of this that everything is not so watertight anymore. Every relationship is not conventional or traditional. People are okay with questioning themselves and trying to figure out कि उनके लिए क्या workout करता है. And in that process, they're actually being honest to their partner. अगर वो कमिटमेंट से घबरा रहे हैं तो वो पर वो लाइक करते हैं दूसरे इंसान को तो वो कर रहे हैं सिचुएशनशिप बट वो ब्लेटेंटली बता रहे हैं ना अगले इंसान को या अगर वो ओपन रिलेशनशिप करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल बिकॉज दे वांट टू एक्सप्लोर एंड सी व्हाट एल्स देयर इज आउट देयर इन द वर्ल्ड आई थिंक दैट्स a way better communication than hiding it and kind of like going behind someone else's back. So these new age terms have given a little bit of these like gray areas a name where you and the other person can be on the same page. True. Priyank, I so know that you are an old school lover, but are you getting hold of all these new age terms? I am definitely learning. I'm trying, Pooja, to learn all of this. Yeah. They both seem to be surprised. They're like, such में old school lover है Priyank. It is. I mean, it is. Yeah. For me, it is definitely very surprising कि क्या से क्या हो रहा है. इतना और deep चले गए हैं. मतलब इतनी चीजें होने लग गई हैं एक तो आजकल. इतने वर्ड्स आ गए, बेंचिंग आ गए जो मैंने कभी लाइफ में मतलब करते थे. ऑब्वियसली लोग करते हैं, बट उसके टर्म्स आ गए हैं इन सब चीजों के. सिचुएशनशिप करके जैसे आ गए, मुझे पता ही नहीं था क्या होती है ये चीजें ऑनेस्टली. फिर मैंने अभी आज एक और नया वर्ड सुना, ज़ॉम्बीइंग. मैंने कहा वाह यार क्या क्या चल रहा है. फिर कोई पॉकेटिंग बोल रहा है. तो आई मीन या टू ईच टू इट्स ओन. आई मीन अनटिल और अनलेस अगर आप बस किसी का दिल ना दुखाएं यार, कोशिश करें दिल मत दुखाइए किसी का. फिर बाकी अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर आप ओपन है अपने पार्टनर के साथ कुछ भी डिस्कस करेंगे, तो इट्स एक्चुअली वेरी सब्जेक्टिव. अगर आपके पार्टनर को कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों पार्टनर्स को, देन आई मीन इट्स अ ग्रेट स्पेस टू बी इन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू नो, इन दिस. हाँ, पर जिसको नहीं जमता फिर उसको नहीं जमता, जिसको जमता उसको जमता. सो आई मीन इट्स बोथ द वेज. But this show also delves into fear of commitment. जैसे मैंने मेरी personal example से भी बोला कि there is so much of fear of commitment. But do you think we are losing out of true love because we are constantly into that fear? Do you fear of commitment? I don't fear of commitment. I have obviously been committed to a lot of. I mean, my exes unfortunately didn't work out my relationship with them. But I won't say that I fear of it. It's just I prioritize it. I mean, I have different priorities in my life right now. Maybe the love is going to be a priority when I feel that there is a void. Right now, my work is filling that void. You know, I don't feel that void. But the day I will feel that void, then definitely I will be switching back to that. So there's no fear as such for sure. Nupur, do you fear of commitment, or do you want to be in a committed relationship? I'm in a committed relationship. I've never feared commitment. Wow. जो करना है पूरे दिल से करो, वरना मत करो. क्या बात है. And what about you, Anshuman? I mean, मुझे ऐसा कोई फोबिया नहीं है कमिटमेंट का. Okay. शादी के कमिटमेंट से जरूर है. शादी से मुझको डर लगता है, but वो उससे मुझे थोड़ा डर लगता है. मुझे मतलब डर इस बात से नहीं लगता कि मैं किसी को कमिट कर दूंगा और फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, उनसे शादी है ऐसा कुछ. मुझे उसके बाद की जो जिम्मेदारियां हैं ना, उससे थोड़ा सा डर लगता है बस. I'm sure. But you three are playing different shades of characters. अपने character traits से कुछ relatable चीजें हैं जो आपने महसूस की है, या you had to work on certain areas where you were unaware about the fact कि ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं. मैं जब छोटा था ना तो मैं बहुत सारांश जैसा था. I was a very sweet, good boy, best boy. ये हाँ मतलब ideal boy. पर जिंदगी ने मुझे ऐसा कर दिया कि अब मैं सारांश जैसा तो नहीं हूँ, पर हाँ, there is a side of me which is like Saransh, so I just had to tap that, and yeah. Nupur? I feel like I'm half Saransh, half Jinal. Oh. Priya? Yeah, because I was very, very like growing up, I was very kind of like that. You have to be good at your studies, you have to get the best job, you have to get the best college, super competitive at school, all of those things. But like how Jinal has a lot of aspirations in life and she wants to do something, she wants to step out of Baroda and she wants to see what there is in the world. She wants to be an independent woman. She wants to choose her life. She wants to design her life. She just doesn't want to live the life that
her parents or Saransh's parents or their friends think that she's going to live. So that is also a part of me, which is why I decided to quit my job and start acting. Yeah. Priyank, I don't think so many characteristics are relatable, but there must be something that you were unaware about yourself कि मैं ऐसे भी हो सकता हूँ. सी ध्रुव के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो एक्चुअली बहुत क्लोज है प्रियांक से. मतलब इतनी हाँ एक्चुअली बहुत बहुत क्लोज है प्रियांक से. Wow. So it is one of those characters which is actually very safe. I've played here, and it is very close to Priyank. So it was a motivation. It became a motivation to go ahead with this. So I mean, हाँ, but ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे लगा कि मैंने out of the box जाके explore किया. I think I have known myself enough and my boundaries and my base enough. Foundation enough to know what I am and what can I offer in the character. Also, it was not that. I mean, there was nothing new to explore today. Correct. But I still had a great time. Oh, nice. Yeah. Everybody dreams of an ideal proposal, and शो में हम देखते हैं सारांश जिन्हों को प्रपोज करते हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करती. आपके लिए कोई आइडियल प्रपोजल रहा है? अभी मुझे प्रपोज करना है, वो आइडियल प्रपोजल में बचा के रखा हूँ. जब करूँगा. रिवील नहीं करना है, कोई बात. हाँ, मैंने सोचा भी नहीं है. अच्छा, सोचा. अरे भाई, पेरिस हो गया है, ठीक है, जंगल सफारी कर ली है लोगों ने, अब मैं कहाँ प्रपोज करूँ भाई? रेलवे स्टेशन के बाहर करना पड़ेगा, कानपुर के, वैसा कुछ. नुपुर, आपके लिए कोई रहा है आइडियल प्रपोजल? I'm very big on all this, like big grand romantic gestures, proposals, all of that stuff. Yeah, I'm like a huge sucker for it. Some of the memorable proposals. There was this time when someone like did like a treasure hunt of sorts, like gave me like a chocolate with like my picture and his picture printed on it, and then it had a question, and then another chocolate, and then another one, and all of that stuff that like really excites me. Watching our favorite film in the hall and then doing it in the interval. Lots of stories. क्या बात है. प्रियांक? Ideal proposal. I mean, है तो सही, मेरे पास भी idea है, but I want to keep it to myself right now. अभी रिवील कर दिया तो फिर पता चल जाएगा ना सबको क्या करने वाले हैं प्लान. बिल्कुल नहीं, पता भी नहीं चलना चाहिए. कुछ चीजें प्राइवेट है तो अच्छा होता है, नजर नहीं लगती. मैं बहुत बिलीव करती हूँ नजर में. Okay, lastly guys, I have few random questions, unknown facts about love, relationship and friendship about your life. So I'll just throw a few questions and you have to answer. When was the first time you fell in love? First time I fell in love, I think I was in 7th standard. Yeah, I know the story. Yeah. I was in first standard. When first standard or? Also, yeah. I think I was in 9th grade. Okay, unforgettable proposal. No. Oh yeah. Oh yeah. Oh. So I'll tell you, I was in 7th standard. There was this topper of the school. Okay. In my class. Okay. She was she was very studious, a big fan of Harry Potter and all of that. वो चश्मा भी वैसे ही लगाती थी and all of that. And वो मुझसे बात भी नहीं करती थी सीधे मुंह ज्यादातर, क्योंकि मैं स्कूल का बदमाश बच्चा था और वो टॉपर. मतलब वो मेरी क्लास में थी, मेरे आगे बैठी थी, पर वो ऐसे देखती थी जैसे अंशुमन. तो एक दिन रैंडमली मैं सुबह सुबह स्कूल पहुंचा और ये लड़की मेरा हाथ पकड़ती है और मुझे खींच के ले जाती है स्टूल के ऐसे पीछे की तरफ. तो मैं बड़ा डर गया. मैंने कहा भाई क्या सीन हो गया? एंड शी इज लाइक, अंशुमन आई लव यू. What? Wow. You will have to date me. भाई उसने मुझे इतना इंटिमिडेट कर दिया. मैं उसको देखा, मैंने बोला भाई ऐसे कौन डेट करेगा तुझे डरा क्यों रही है? Oh my god, wow, lucky you. वो एक था जो मुझे काफी सालों तक मतलब वो याद रहा मुझे. मतलब वो बड़ा डेयरिंग सी चीज थी वो. नुपुर एंड प्रियांक, आपको किसी ने ऐसे प्रपोज किया है कुछ अलग वे में? Dude, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी और मेरे कमरे के पीछे एक बालकनी होती थी, ठीक है, और सर्विस लेन होती थी उसके नीचे. So this guy used to throw things on my window नीचे से, क्योंकि मैं बहुत डरपोक थी तो मैं स्नीक आउट करके बाहर नहीं जा सकती थी कोई भी गिफ्ट लेने के लिए.
And one day I was talking to him on the phone, and suddenly I heard like a huge thud on my window. मैंने उसको फोन काटा, मैं जाके अपने डैड को बोल दिया कि मेरी शीशा तोड़ रहा है कोई बाहर से. And my dad opened the door and he looked नीचे and the boy was standing नीचे and was throwing like gifts for me. And he ran and then like a dog ran behind him and like it was a whole thing. So yeah, that was pretty memorable because poor thing was doing the right thing and I got so scared and I like almost got him killed that day. Oh God. Priyank? वो तो ऐसे बहुत है, मैं बस जस्ट कोशिश कर रहा हूँ कौन सा वाला याद करूँ मैं. But there was in my school days there was a bunch of girls I remember. वो पूरा जो होता है ना 4-5 लड़कियों का जो पूरा ग्रुप होता है, and then I was a crush for 4-5 of them. वो 4-5 ही मेरे पास आ गई थी Valentine's Day. कि चूज कर लो. चूज में ज्यादा बस वो अपनी मतलब चूज के लिए तो नहीं आई थी, पर वो ये अपनी फीलिंग जरूर बताने आई थी. 4-5 एक ही साथ आपस में सहेलियां थी मेरे हिसाब से, और वो एक ही साथ आ गई मुझे बताने के लिए क्या हमें बहुत पसंद है. Oh God. मेरा प्रियांक पे क्रश था और अनफॉर्चुनेटली मेरी रिपोर्टर फ्रेंड को जाके उसको बोलना पड़ा जब तक मैं नहीं मिली. बताओ मैसेंजर टू यू. आई मीन Yeah, बट हाँ ऐसे है. बट हाँ और थोड़ा याद करूँ तो और भी इंस्टेंसेस याद आ जाएंगे. तुरंत भी लगती थी Oh my God. Oh my God. That also. That's why old school summer. Okay. We are running out of time. I have to wrap up this interview. But lastly, one thing. First heartbreak. कौन से एज में हुआ था? First heartbreak. कौन सी एज I think 21, 22. Yeah. I had it right after my boards. I think ऐसे ही कुछ था. During my boards or right after my boards. Oh. अंशुमन? मैं बस हार्टब्रेक करे हैं मैम, क्या बोलूं. Oh, red flag. हाँ. भगवान ने अभी तक बदला लिया नहीं है मेरे से. ना ही ले. He is totally the logical. Or illogical. Let's find that out on Valentine Day. Guys, please wish all the viewers of Awesome TV a happy Valentine Day. To you too. Thank you. Happy Pooja, thank you. Valentine's Day. Happy Valentine's Day to all. And the logical देखिए जाकर 14 Of course. को. Of course, 14 तारीख Valentine's Day. Dill Logical आ रहा है Amazon Amazon Mini पे. TV पे. You can watch all the episodes for free. You can binge watch them and have the best time. If you have a date, watch it with a date. If you have a galentine like a friend, watch it with them. Or do some self-love and watch our show alone.